make most out of it. युवा सोचता है, युवा बदलता है और युवा विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म में निपुणता, जीवन को समर्पित करने का अनुभव का गहरा संबंध, हर कार्य को करना, मानवता की सेवा में बढ़ना, कर्तव्य का पथ हमने मन में बसाया है। इन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हुए आज का दिन लाया है एक नई शुरुआत, नया कर्तव्य और कर्तव्य पथ ब्लॉग का आगाज। Hello and good morning everyone. I am Komal Joshi, Incubation Manager at JECRC Incubation Center. Would like to extend a warm welcome to all of you at the grand launch of Kartavya Path Blog in association with JECRC University. This auspicious day has brought a new birth of a platform that represents the powerful medium of self-expression, knowledge sharing, and personal growth. And what makes the day more engrossing is the upcoming ever-shining presence of the unicorn founder, Mr. Vijay Shekhar Sharma. We all are very, very fortunate. We will have him with us within half an hour. Along with Mr. Vijay Shekhar Sharma, we have a esteemed this program. I would like to formally invite all the bloggers on the dais, Mr. Devan Shah, Yashashvi Rana, Parth Bhatt, Navina Singh. And I would like to invite the moderator of the show, Mr. Vaidyanathan Iyer. Please give them a big round of applause then. Allow me to introduce our moderator, Mr. Vaidyanathan Iyer, who is the editor-in-chief of Kartavya Path Blogs, and professionally, he is marketing professional with 5 years of experience in the domain and currently is working as a marketing strategist in MNC in Bangalore. He has completed his engineering from Navrachna University and then pursued his MBA in strategic communication from MICA. He is passionate about contributing towards policy and research. On behalf of entire JECRC family, I would like to welcome all the esteemed bloggers and my dear friend and colleague, Mr. Vaidyanathan Iyer, for this show. We would like to welcome them with a flower presentation, and for the same, I would now like to request Mr. Abhinav Damija to come upon this stage and formally welcome Mr. Vaidyanathan Iyer. Mr. Abhinav, may we have you on the stage, please? I request my team, Mr. Vaidyanathan Iyer. Please give them a big round of applause, guys. Next, I would like to request Mr. Kunal. He is the core team member at JECRC Incubation Center, JECRC University, to present a floral welcome to Mr. Devan Shah. Kunal, we request you to come on the stage, please. Thank you, Kunal. Now I would like to request Mr. Vansh from JECRC Incubation Center
to present a floral welcome to Mr. Parth Bhatt. Thank you so much everybody for being with us today. I would now request Ms. Vishakha from JECRC College to come and present a floral welcome to Ms. Yashashvi Rana. Ms. Yashashvi Rana. Express your happiness and respect and loudly for the panel. Thank you so much. Now I would like to invite Ms. Vishakha Mulani from JECRC College to present a floral welcome to Navina Singh. I urge and request a pin drop silence because this program is going to be a very important in our life. I once again urge all of you to make most out of it. We all are gathered here to learn something and witness something very big today. Thank you, Vishakha. May I now have Mr. Parth from JECRC University to present a floral welcome. Okay, sorry, we don't have Kuldeep Singh. Okay, now before we proceed further, I would like once again to give a big round of applause for you guys for coming and witnessing this mega event with us. Keeping you with the anticipation that very soon we will have Mr. Vijay Shekhar Sharma, the founder of Paytm with us. I am really excited and I am hoping that all of you are eagerly waiting for the moment to come. Yeah, good morning everyone. Yeah, I think for the next 20 to 25 minutes, please pay attention because what we are going to do here, who we have here is an esteemed panel. And I'll do a quick introduction, but what I believe is in the next 20 minutes, you're going to get a lot of information which will be super relevant for your day-to-day life. I believe as a student, I was sitting across 5 years back, where you are sitting. And at that point of time, the biggest regret I have is not being aware enough. When you don't know what is going on around you in the nation that you are living in, then that is the biggest disadvantage. What's going to happen in the next 20 minutes is we are going to give you a lot of relevant information which is super critical for you to know. And through this panel, that is the motive and objective of this panel. We want esteemed guests out here who have a lot of knowledge in their respective fields, who have written a lot of blogs, which you'll see in the Kartavya Path Blogs, to come and share a little bit of tidbits of information which will be super relevant for you. And you'll be amazed by the information that these guys will be sharing. So without ado, what I'll do is I'll quickly introduce the panel out here. So we have Devansh Shah, please give it up for him. Devansh Shah is a young professional currently serving as a policy consultant to the Honorable Minister of State for Communication in the Government of India. Devansh also holds the role of Y20 Track Chair for Future of Work, where he oversees key areas such as Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skill. He is also featured on the esteemed 25 under 25 list by Young India Foundation. Thank you, Devansh, for joining us. Next we have on the list Navina Singh, Yashashvi Rana, Yashashvi Rana is an aspiring policy professional. She has completed her Masters in Public Policy from University of Mumbai. She has interned at Niti Aayog in the education vertical. She has also worked with Mira Bhayandar Municipal Corporation, Nation First Policy Research Center in the past, and currently she is working with the Forum of Integrated National Security as a research associate and working on the Indo-China relations. So thank you so much for joining us, Yashashvi. Next we have Parth Bhatt. So Parth Bhatt is a company secretary.
CS Park Bhatt is a corporate lawyer and compliance professional with over 5 years of experience in the field of compliance, risk and governance. He is currently working in one of India's premier cybersecurity company as a company secretary and compliance officer. He is passionate about contributing towards policy formulation and input assessment of India's footprints in geopolitics. So give it up for Parth. Thank you for joining us, Parth. And lastly, but not the least, we have Navina. Navina is Navina Singh is a master's student in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She is pursuing her degree in the field of international studies encompassing areas of international law, of peace and legal controls, of international conflict, diplomacy and foreign policy. Thank you so much for joining us, Navina. Yeah, pleased to have you on the stage today. With this quick introduction, I'll quickly jump into some of the blogs that these guys have written. They have contributed massively in getting Kartavya Path blogs to life. And I want to quickly jump in, let's say, to Yashvi first. So we have a question for Yashvi. And Yashvi, what I see today is, I do remember in 15 years back, and I remember one of the finance minister back then saying that it's impossible for you to have UPI at every corner of the street. What are you talking about? You can't have digital POS machines at every... what sort of infrastructure are you talking about? These were some of the words that were spoken back then. I think this was about 7 to 8 years back. From there, what I see here today is even while coming on the way to the airport, we stopped at a small local kirana store and we saw UPI over there, right? I mean, from that day to here, we see the journey of UPI and Digital India being transformed massively. And its implication for the future is also massive. So, not just UPI, but in general, the digital transformation and the digital transformation which the government of India has done. How do you see the future implications going forward? So over to you. Hello everyone. First of all, I want to thank Kartavya Blogs for actually giving me this opportunity to write on this important topic called Digital India, Digital Governance and the Digital Economy of this country. And as Mr. Vaidya asked me about the future implications, I think I would like to first, and how the previous finance minister said in the Lok Sabha or the Rajya Sabha ki how UPI or actually bringing that digital revolution is an impossible task. Okay. So I actually, through these blogs, I got to learn about the whole journey, how India has cash towards a cashless economy. Who was chairing the planning commission around 2008-9. So he institutionalized two of the most important organizations of Government of India, which are the backbone of the current digital revolution. That is the UIDAI and the NPCI. Now, they did started issuing Aadhaar cards at that time, but they failed to tap that potential. Okay, but then came the Modi government in 2014, and there they started actually tapping the potential of Aadhaar card. The first revolutionary move they bring in was the Jan Dhan accounts, which was actually you can get an account opened in any bank of this country through Aadhaar cards. Now this has oversimplified the process of opening a bank account, which was previously not possible for the people who are underprivileged. They need to show a lot of documents before that, like the birth certificate or the PAN card or ration card or so. But the Aadhaar card made it simple. You just have to show your Aadhaar card and get your bank account open. Now that happened and proves that the people who did had Aadhaar card, to people who already had the bank accounts, went through the KYC process to authenticate it. So all that Aadhaar was the genesis of the whole financial inclusion and digital inclusion of the country, of the people of this country. Then came because you want to bring in the digital revolution, internet is in the one of the most important thing, and the penetration of it was hard at that time. There was only 17 crore people who were using internet at the time in 2014-15. So government has this Herculean task to bring in that whole rural population, especially into the internet arena.
So that's when Government of India started with the BharatNet projects in rural areas, where they started laying down the optical fibers to bring in enlarge the connectivity process. And also another sector which like contributed in this immensely was the private sector. We all remember the Jio revolution, how Jio came in, brought that free SIM cards just through Aadhaar card. You have to show your Aadhaar card, authenticate, and you will get a free SIM card. And also it was a free internet for almost like 1.5 years or something. That was a revolution at its peak. Like it disrupted the whole market of the internet services in India. So that was the second most revolutionary thing in the digital India process. Then came the demonetization in 2016 itself, which was kind of took the process forward of digital revolution, because people didn't have cash at that time, all were in bank accounts. So government and everyone, even civil society or the private sector, actually encouraged people to go towards the digital route for their transactions. So they launched the Bheem UPI app, and also as we have the Paytm founder coming in today, we all know the role of Paytm which has played in this whole process. Paytm actually started with the UPI, and then other players came in like GPay, PhonePe, the government's own app, Bheem UPI. So all these things actually rolled into one systematic chain of events, and this brought in the Digital India revolution. Second thing about the Digital India was the DBT transfers to it. So how government, the Jandan accounts were actually integrated with all other schemes, whether DBTs or directly subsidies or cash transfer would be provided to them in their bank accounts. So through this, government actually saved around 2.25 lakh crores, which were actually leakaged previously. So that was a big win for the government in this sector. Or also the middleman and all who used to be like used to lead the corruption in these areas. Also then happened is the COVID. So now COVID actually discouraged the contact-based services or contact-based transactions also, like basically the cash transactions. And at that time there was this huge shift, like a huge jump towards the digital transactions which happened at that time. So that's why I would say that Digital India has moved a lot forward, and how private finance minister has said that it wouldn't be possible. We can all see the results now. How even a small kirana store in rural areas have that QR code in their own shops, and now they prefer taking online rather than cash based. So that is the thing. And future, I would say that it has actually enabled a lot of credit access to the people in rural areas. 2 days back, I went to this tribal village for my research purposes around Mumbai, and the first thing I asked the women there, it was a women-led entrepreneurship manufacturing unit, and the first thing I asked the women there who were working is like, do you have bank accounts? And do you go there and actually do? So like all the services or whatever, like they're like, yeah, we ourselves go and do it. We don't need med for that. So they are digitally literate now to do all their banking services online, offline. So that is the encouragement we have got from the government, private sector, civil society, and everyone around for this. Next up for future, I would definitely say that it has a bright future. Today, India is leading the whole digital transaction revolution in the country, Digital India. Countries like Japan, Singapore, France are actually looking for our Aadhaar-based services and UPI services. And Singapore and Japan has already signed their MOUs with Indian government for the UPI technology transfer, which is a great deal ahead. Even UAE is now looking forward to our technology. So I think now we are moving forward to transferring our technology to other worldwide, which would be a great, I think, gift to the world from Indian government. Thank you. Thank you so much, Yashvi. I think what you beautifully narrated was, and which students I would ask you to maybe focus on this, is the essence of process. The government laid the foundation of this entire ecosystem first, and then proceeded to implement it across the nation, and now is proceeding it to export the service. I think what is crucial for you as students and future leaders is going forward, any project that you do in your life, anything that you execute in your life, I think it's for us to take these learnings to make sure that you lay the ground, lay the basics first, and then build upon it. So thank you so much for putting that beautifully, Yashvi. Quickly moving on to Devansh, and we are going to jump topics
right? Just a rabbit. We are going to jump across one topic to another topic because there's a lot of things that we want to discuss, but very little time. So what I want to do is, I do remember watching Times Now and Republic constantly when 26/11 happened. And post 26/11, I do remember that, at that point of time, I remember there was just Times Now, Republic wasn't there. But news channels constantly, I didn't go to school back then. I remember watching the TV constantly for 2 days, back to back. And we were all so disappointed by what happened, so traumatized by what happened. Not just that, going forward, I think in the next 4 years, every day we used to wake up to a terror attack. We used to wake up at a bomb planted by Simi, or a bomb explosion happening in Ahmedabad, Surat. I remember I'm from Gujarat, so I used to relate to those stories more. Across the nation, there were so many terrorist attacks that used to happen so frequently. From there, Devansh, what I want to ask you today is, I don't recollect, and thankfully, by God's grace, I don't recollect the last terrorist attacks which has happened, and that is a massive internal security transformation. I just want you to talk about that in detail and give your viewpoint on it. Knowing that you work so closely with the government, I would love to know your viewpoint on that. Thank you so much, Parth, for the question. First of all, I'd like to thank Kartavya Path Blogs for inviting me here today, and JECRC College for having us here today. It's wonderful being here. Like you rightly said, we don't remember what the last time was when there was a terror attack in the nation, and that's an extremely proud thing for us as a country. You know, I would like to talk about something extremely relevant that is happening today. To all the students there, just an open-ended question. Please raise your hands if you agree. How many of you know India is hosting the G20 presidency this year? Pretty much everyone, right? How many of you know India recently did a G20 summit in Kashmir and in Leh? A decade ago, this would not have been possible. I mean, how many of us actually thought that a decade ago, India would invite international delegates to Kashmir, hold an international summit in a place that certain countries call it disputed, and if nothing else, this was the entire world accepting that Kashmir is and will always be India's sovereign territory. Now, I was fortunate enough that as the Y20 chair, I was also there in the Leh summit. And we went there, again, we received very strongly worded letters from nations calling it a disputed territory and whatnot. But the amount of love, the amount of warmth that we saw from the people there towards the international delegates, they were so happy to host everyone. And the sort of sense of security that everyone had, there was no worry. It truly felt like heaven, heaven on earth was back again. If we talk about numbers, the tourism in Kashmir has risen up by 60% now. The concept of Jamhuriyat or democracy that used to exist, that did not used to exist in Kashmir, it was limited to, I believe, 60 MLAs and 3 families, which has now been extended up to 30,000 people, and it's going down right to block development centers, Zilla Panchayats, Gram Panchayats and Sarpanch for that matter. When we move forward, we come a little bit to the center of our country, which used to suffer from Naxalism or left-wing extremism. Those numbers have come down by 77%. Left-wing extremism in our country is down by 77%. These are huge numbers that show that India as a nation has always had a perilous journey. We've always had a journey that has been filled with hurdles. But it shows our resilience as Indians. It shows our motivation to rise up to these challenges and prove to the world that we are a force to be reckoned with. When we talk about our internal security, we also have to, we can't really talk about internal security without mentioning how India is being looked on by the other countries as well. So when we were in Leh and, we were having a roundtable discussion of sorts, earlier, the discussions would usually be centered either around the Kashmir issue or, they would say that there are human rights issue, or they would say that, India is a poor nation, it's a developing nation. Today, these discussions are centered around how has India developed such a tremendous startup economy, how is... that is one question that every single economy, and I think by the end of the year, we are the third largest economy. And economic growth is something that accompanies security with itself.
I really strongly believe that we're moving away from a bipolar world to a multipolar world where India is now a force to be reckoned with. So these are a lot of the issues, that have ultimately resulted in India being an extremely secure nation and the world having the trust that, this is truly there. And I believe the G20 to the fullest to ensure that the globe knows that India is a force to be reckoned with. Thank you. Thank you for that inspiring quick talk, Devansh. I think all of us resonate in the room with the words that you said. I want to quickly move on now to our next topic, moving from security to prosperity. And how does prosperity come through is through building that ecosystem of technology, right? And next question to you, Parth, is how do you think induction of new technologies like ONDC, UPI we talked about, OCEN, and change the way India does business and improve the economic output and efficiency of India? I think all of us in this room would resonate with efficiency, because right now India is no longer a developing country. We want to compete with the best countries of the world, and I think efficiency is the key word now. So focusing on efficiency, these ecosystem that we have developed, all of these apps which the government has built for the consumers, for the citizens, how does that have an impact in the day-to-day life? And Parth, coming from a company secretary background, from a tech background, I think he would have a lot of insights around that. So over to you, Parth. For giving me this opportunity to contribute something in pursuit for young people to read and to have such material out there in public where they can have access to government programs and how the world around them is functioning, and also to the JECRC for inviting us and hosting us. Just by quick show of hands, how many of you know about, obviously a lot of you know about, most of you know about UPI. How many of you know about OND? That is amazing. How many of you know about OCEN, or how you pronounce it, OCEN? Very few. Okay, that it's still a budding technology. And how many of you know about the Gati Shakti plan? Beautiful. Now what I'm going to do is I'm going to take you through all these four technologies and the systems that the government is putting in place to transition India from currently, I think we are at $3.77 trillion economy to a $5 trillion economy in the short term, and then to propel that economy into a $10 trillion economy in an even quicker time. Now what happens is, we are living in a very exciting time right now. What our parents featured, what time they lived through, was a period when India moved from a $500 billion economy, which was before the liberalization, privatization, globalization, the 1991 reforms, to a 1.8 trillion economy when the current BJP government came into power. I think it was 2014, and it took us from 1.8 to 3.77 in just, I would say, about 9 years, which is a very significant milestone for India as such. Now, what matters and what every country needs is a strong logistical policy, is a strong credit policy, is a strong cash transfer policy, and a strong commerce development policy. Now these all four triggers for you as next generation of young professionals to the market, this would create a lot of opportunities for you. 40% of all startups are going to come from fintech, are going to come from supply chain and logistics management, and various other allied areas that the government is currently working on. Now, let us, my esteemed co-panelist Yashvi did speak about UPI. It was unheard of before 2014, if I'd say to you that there are any other means of transactions or transacting or buying a product or engaging in any sort of commercial activity other than using cash, credit card, net banking, or anything, which was all a bit cluttered. To be very honest, it's still cluttered to me. You have passwords, you have profile passwords, you have OTP, two-factor authentication, which is all a part of security, I understand, but it reduced a bit of seamlessness. What UPI did for the economy was to standardize and to
take it to another level of scalability where each and every one of you, even a normal person, can transact through just a mere QR code right from their account. And a normal person can receive the same money through their QR codes. So that, created a very standardization and a very seamlessness in the economy in terms of cash transfers. People were no longer dependent, they didn't need to carry cash. A lot of the transactions was whitelisted, everything could be tracked. We now have close to a billion or a billion and more transactions monthly in terms of UPI, which is a great achievement. Secondly, I would focus on the Gati Shakti plan. Now, as most of you know, that earlier this year, the Prime Minister launched the Gati Shakti Master Plan, which is a 100 lakh crore outlay investment, which is aimed at revolutionizing the internal supply chain and logistics system in India. What we have problems in terms of our current scenario is most of you आई थिंक आप सुनते होंगे कि हमें चाइना से बहुत सारी कंपनीज यहाँ लानी है, हमें सारा प्रोडक्शन यहाँ लाना है. वी हैव टू हैव इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड नॉट चाइना एनी मोर. According to 2018-2019 data, 58 companies moved from China to India, moved from China to the rest of the world. Now, you'd be surprised to hear that India was only able to attract 3 or 4 companies out of those. It's a large chunk. 3 or 4 companies out of 58 is not a big figure. 7 of these went to Vietnam. Some 8 or 9 went to Mexico. And a couple of these to other South Asian nation economies. Now what they're doing right is they have a supply chain logistics which is way more efficient than us. Their connectivity and of course their in terms of geography, they are a lot smaller countries. So in terms of connectivity, they are a bit more efficient than us. So there's a concept known as average turnaround time, which ships have. So if there is any particular ships that lands in our port, it takes 2.5 days for the product to get loaded and unloaded. In China, that time is 12 hours. What Gati Shakti aims on doing is having all these ministries, every single ministry in every state, be there on a common platform. Now, a simple example of this would be, let's say we are putting a line, we're building a road, a national highway. Now, it would take approvals from the road authorities. Then, earlier what used to happen was, now we need to put a fiber cable. What should we do now? Oh, now let's dig the road again. And then let's lay another fiber cable. What this does is it causes unnecessary expenditure on the taxpayers. It increases the time for implementation of all sorts of projects, and eventually it reduces the overall efficiency. What Gati Shakti does is there would be an interlinking of ministries in terms of approvals, in terms of contact, in terms of data sharing, which by the time there is a detailed project discussion, when you say that you have an outlay of let's say you want to build an 1300 kilometer expressway, there'd be the land acquisition, the gas pipelines, the fiber outlay, all would work synchronizing. So that would create more efficiency in terms, and since it would be a one-shot thing, everything would be laid correspondingly. So it would be more of productive in that matter, as well as it will reduce the taxpayers' burden. So Gati Shakti will do wonders for us. And of course, this is all of these schemes are basically long-term schemes. You would not see their benefits in just 2 or 3 years. Moving on to another one of the platforms that the government is bringing, which is the OCEN. Now, this particular platform is the Open Credit Enablement Network. What this does is that currently you must have heard that MSMEs are the backbone of the economy. MSMEs हमारी इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग का 40% हिस्सा MSMEs है, बट MSMEs को कोई लोन नहीं देता. It is easier for a big corporate like Adani and Ambani or maybe Birla to get a loan, and it is understandably acceptable because banks would not want to take risk on small traders. The ticket size is very small, and most big ticket banks would not let themselves indulge in those practices. What OCEN does is bring all these credit providers, underwriters, loan service providers, and customers onto one platform by where they can transact and they can establish an entire credit ecosystem where
get their loans easily. How this is done is similar. They have open APIs and required loans, which then they could use to expand their operations and increase the overall productivity. And this four measures, I think the OCEN, the UPI and the Gati Shakti, along with the ONDC. Now I saw a lot of people, they've heard about ONDC. How many of you have used the first basic core version of ONDC? What is there existing in the market currently? I know we saw a lot of viral posts which talk about ONDC delivering at a much cheaper price than Swiggy and Zomato. Has any one of you used currently ONDC? So, you may want to try. It's just a budding technology, so I think that would really help you. There's this app known as Pin Code. It's one of an alternative to ONDC platforms where to Swiggy and Zomato, where you can see ONDC working firsthand, where sellers are directly listed themselves on the platform and you can get product cheap. Have Amazon, Flipkart and multiple sellers, right from a mango to a refrigerator or maybe even a big capital machinery on one platform, whereby the customer can have a lot of choices. Now based on these choices, there'll be a reduction in prices. He would have a better bargaining power. This would increase the customer's say in the market and would increase the access to the digital commerce for small players who either would have to go through big ticket, big selling platforms, tech companies. So what the government is currently trying to do and what these initiatives are, these four initiatives together, if you look at holistically, are aimed at transforming India's digital economy and the way India transacts, the way India manufactures, the way India internally supplies and goods within its own boundaries and to the rest of the world. So it aims at making India the factory of the world. Now I'm reminded of this quote that it's a very famous quote that the future generation is secure when old men plant trees. They know that they're not going to see the shade of those trees. So these particular measures introduced by the government, these are not for immediate benefit, but we would see the lasting impacts of these measures long term. And you guys as the youth of the country would be a driving force to develop startups, to engage in multiple skill sets, develop new areas in terms of logistics, in terms of credit, in terms of UPI, build platforms to make people's lives more easier and better for the future. Thank you so much. Thank you, Parth. I think I haven't heard a more detailed explanation of such complicated platforms and such complicated technological terms. So thank you so much for that, Parth. That was very informative for all of us. Navina, we come to you last, and the question for you is, again, I'm going back to my nostalgic memories in my olden days. I used to remember whenever a leader, whenever our Prime Minister would visit other countries, the question in the media was, how much are we getting? Are we getting a $1 billion loan? Are we getting like 100 billions? I mean, it's just that. What are we getting in return? Now, if you flip the question, and that's just the entire situation has flipped. And yesterday we could see when our Prime Minister went to Egypt, Egyptians were looking at what India can give, and India actually gave a ton of investments into Egypt. It has completely flipped. The narrative has flipped, the story has flipped, and that is majorly because of Indian foreign policy. And that's going to be my question to you, Navina, is from being regarded as a non-player, as an underdeveloped, developing nation to a superpower, how has foreign policy and a global policy contributed to that? Thank you, Vaidya. Thank you, everybody, for this opportunity. Well, if we see Egypt, with the just freshly born post-colonial state, struggling with our internal dynamics, taking loans and everything, today we are one of the fastest growing economies, so the dynamic has
definitely changed. So in the foreign policy arena, we can say that there are certain continuities in which the present Modi era has actually, we can say added. It's like the cherry on the top of the cake is the fact that India has a certain inherited historical responsibility, if I talk about it. When in 1947 we got independent, India took up the cause of decolonization, the right to self-determination of the countries, talking about why should we, the nuclear apartheid thing, anti-apartheid movement, a lot of things India indulged into stuff like this. This was also because of the structural conditions which were existing back then. Back then, the world was actually marked by Cold War rivalry, if you know, that is the rivalry between US and USSR. So that had left no space for India to find anything for itself. The whole world was divided into satellites of US or USSR. Even back then, India found a way, a middle path for itself to form a coalition of the subaltern countries, if I say. And even today, if we see it is taking up a lot of causes. Let me bring to you the main issue, that is the issue of climate justice, for example. This was a concept proposed by Mr. Modi, wherein we are talking about the fact that yes, climate crisis is real, but the responsibilities that the world share is not equal. There are certain set of countries which have actually flourished at the cost of countries like us who were back then not developing. They were developing themselves at our cost, at the cost of our development. So do you think that we should pay equally, at an equal footing? So well, that's not very just to say, and that's where this whole concept of climate justice comes. But we're also a responsible growing power, and that is reflected in the Panchamrit commitments at the Glasgow Conference of Parties, wherein India actually gave some concrete concrete goals for itself, which it is going to strive for in the whole climate change arena, which says that we are doing the job, please you too do yours, and that is this also involves many other more concepts, ideational contributions of the Modi government. If we talk about, there's this one concept of loss and damage. So much damage has already been done to the environment that the effects of it are now being seen everywhere. It's not like if there's a country A which got into some menace and developmental things back then, and we are not going to bear the brunt of it. We also are going to bear the brunt of it. A tsunami comes, a cyclone comes, Bay of Bengal has its geographical dynamics changes, Arabian Sea has its geographical dynamics changes. Is it because India did something wrong? No, it's because somebody else did, but we have to pay for it. So this basically tells the global nature of the problem. And it is also here that I want to talk about the importance of multilateral institutions. This is one more continuity in Indian foreign policy. What I mean by multilateral institution is an institution where all the countries come together to debate and form a consensus on issues of common areas. So even back when India became independent in 1947, India has taken up a lot of issues at the United Nations, which is one of the most credible multilateral organization ever, even today. But the problem is that UN was formed in 1945. What was the systemic conditions in 1945? It was USSR Cold War rivalry. So it was also the post-World War order, wherein we can say the victors of the Second World War had more say than other countries. So how can we continue with a structure like, how can we continue the power and with an institution having the power dynamics of post-Second World War world order, while today we are in a post-COVID-19 world order, wherein it's not just US or Russia in the world, there are many other important poles. India being one such important pole, Brazil being another, China being yet another. There's so many countries. How can we continue with this principle of unanimity, we call it? You understand this P5, the permanent 5 members have veto in their hands. That is called, if they agree on it in a unanimous voice, the thing is going to pass. Otherwise, there's no point of it. So we have to do away with this. Today, the World Trade Organization is also pretty meek. If we talk about the IMF, the Bretton Woods institutions, which are the international institutions regulating finance and trade, they're also pretty weak because of their governance structures. So that is why we see Modi government's one of the most important thrust areas in foreign policy has been norms, NORMS, which is new orientation for reformed multilateralism. We have to reform the multilateral organizations today so that they fall in line with the current power dynamics. They represent what the power dynamics today are. Today, this is not the world where only US and Europe exist. We have to move past these
transatlantic countries and take into account of those countries which have had, a wrong past, not because of themselves, but because of some other countries. We see India actually taking up their issue everywhere too. With respect to the COVID-19 vaccines. So India and South Africa together mooted to just relax the intellectual property rights for this vaccine thing so that it can actually equitably go to all the countries and not just, we cannot commercialize things like this. These are global public goods. And now what India should be doing, and is actually what it is vying for, is to increase these relaxation in the areas of therapeutics and other things as well, which is a great thing to do. And so I think that's all. But yeah, last point is that I would like to cover one point is that after 1945, when we took up the non-aligned stance, wherein there was this third block of countries, including India, Egypt, Indonesia, who were like, we do not want to bear the brunt of your rivalry. Please let us thrive. We have our own developmental priorities and concerns. Today is the time when India, as one of the largest economies, is actually has sort of moved away from non-alignment to non-alignment 2.0, which is nothing but multiple alignments. Today, India looks forward to many different countries to secure its national interest. Just a couple of days ago, we got signed an important technology transfer agreement with US. Whenever need arises, if it's about our energy security, we will talk to the Russians, even if the US people do not want that. And we are talking to China on many other common developmental concerns at SCO. For example, SCO RADS, that is for like regional I'm sorry, I'm not able to recognize the full form, but it's about anti-terrorism related aspects. So we are also collaborating with countries with whom we have significant bilateral issues. So we are into that era of multiple alignments where we are actually securing our vital, comprehensive national interests, while we're also on not neglecting other countries. And that is why that's one reason why the scholarships call India as the regional security provider, the net security provider, and the first responder in the region. Today, when a few days ago Syria and Turkey were hit with earthquakes, we had this Operation Dost. Amazing. You have to look into the dynamics of that operation to understand that how India went all out to help them. There have been instances when India actually rescued the nationals of other countries on an equal footing of its own citizens as well. The Afghan crisis, where we did not even have a stake in multiple, dynamics which were shaping Afghanistan, we did send food consignments there as well. And Vaccine Maitri is the best example. So what I want to say is that India isn't just an inward-looking country today. It is geopolitically advanced, strategically advanced, very focused, targeted, but at the same time, I think when it comes to developmental concerns, it has a very benevolent outlook as well. Thank you. Thank you so much, Navina. I think it's what an amazing way to put this one story, one line, which is India going from asking for help to helping every other smaller nations, right? Beautiful examples of how India has stepped up to make sure that we are catering and also being very strong advocates of non-represented smaller countries in this world. So India is the only country who's actively doing that. I know, Devansh, you are in the Y20 team, and recently India vouched for, like you said, for Africa, the entire Union of Africa being involved and being an active member for the membership of G20. So again, one of those things which you just mentioned, Navina. So thank you so much for putting that. With this, guys, this is a small trailer of what you would see in Kartavya Path Blogs, right? I know today's generation, we are not very active readers, but we would leave the stage with one piece of, which means there is a lot of competition for you guys out there, for us, for you. In order to stand out and to have a better future carved out, you need to have a unique proposition built for each one of you. And I'm addressing the students out here, so please listen to this. In order for you to have that unique proposition for yourself, I think one basic thing which you need to do is be aware. If you talk how the panelists have spoken out here, anyone sitting in front of you, let's say you apply for a higher studies,
you apply for a job, anyone sitting out opposite you in the table judging you is actively looking for you to have that unique proposition. And let's begin here, guys. There's a lot of content out there, and I think all of you will feel super useful reading it. So please subscribe, and thank you so much for listening to this. I hope this was a valuable session for you. Thank you so much, panelists, for joining me. It's an honor to have you here. Thank you so much, Vaidya, for the wonderful panel discussion. Thank you so much for inspiring our students to learn about the importance of blogging. Please put your hands together for the bloggers and our moderator. Ladies and gentlemen, now it is the moment we all are waiting from since today's morning. We gonna have Mr. Vijay Shekhar Sharma within 5 minutes. I know the excitement you have today. हम सब ने विजय सर को सुना है, हमने सब ने विजय जी को देखा है और हम हर दिन उनसे बात करते हैं क्योंकि हमने विजय जी को कैसे सुना है? Can anybody tell me? Paytm करो. Yes, on count 3, 2, 1. Yes, so today we're gonna meet with the budding entrepreneur, the face of this entrepreneurship world, Mr. Vijay Shekhar Sharma. Within 5 minutes, we will have Mr. Vijay Shekhar Sharma with us. I'm truly excited, happy and grateful to the Bhavya Bharat Foundation to provide us with this opportunity to meet with the successful entrepreneurs. Ladies and gentlemen, we have Mr. Vijay Shekhar Sharma, the founder of Paytm. Please put your hands together and give them a big round of applause. We have Mr. Vijay Shekhar Sharma in the house. The man is the ideal student. Vijay Shekhar Sharma. Guys, put your best foot forward to welcome Mr. Vijay Shekhar Sharma. Please join us in giving him a warm and conventional welcome to Mr. Vijay Shekhar Sharma. To prove that dreams come true if you dare to see the dreams. Mr. Vijay Shekhar Sharma in the house, guys. Let's make some noise. To begin the program formally, now I would like to request all the dignitaries to please raise the dais. Mr. Vijay Shekhar Sharma, founder of Paytm, Shri Arpit Agrawal sir, Vice Chairperson of JECRC Foundation, Mr. Rangam, founder of Bhavya Bharat Foundation, Mr. Rukmil Shah and Vaidya Iyer to please grace the dais. Thank you so much, all the dignitaries, for gracing us with your presence today. I would. Yay. Hey! I can't believe. Thank you so much, guys. I think. Thank you. You guys are amazing. I just learned that 50 है. उसके बाद आए. बहुत वेले हो. Thank you so much. You're amazing. मुझे अभी कुछ सुनाई दिया और सबसे बढ़िया बात बताना चाहता हूँ. देखो, कॉन्फिडेंस की बात होती है.
जब आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए ना, अभी अर्पित जी मेरे से बोल रहे थे, देखिए सर पहले होता था कि टियर 1 टियर 2 टियर 3, अब आप क्या टियर 1 टियर 2, जयपुर कौन सा टियर 2, हम भी तो टियर 1 है। देखिए जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना, ये होती है मैं तो आपके टाइम पे सोचा था क्या बात है, कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे आता है। Congratulations, thank you so much. Good to see you guys. Thank you so much. I request our Honorable Principal Professor Vinay Chandna sir to please grace the dais. I can see the energy in-house and outside this auditorium, and the credit goes to one and only Mr. Vijay Shekhar Sharma. Ladies and gentlemen, I once again welcome all of you to the land of Rajasthan. I once again welcome all of you to the grand launch of Kartavya Path Blogs by Bhavya Bharat Foundation in association with JECRC University and JECRC College. In this digital era, blogging has emerged as a powerful medium for expressing ideas, sharing knowledge, and inspiring others. Recognizing the importance of this new age, Bhavya Bharat Foundation has come up with this one-stop solution for the masses by creating a platform where you can get information of 10 different themes through intellectual blogs. And JECRC, being the responsible institution in North India, has always been instrumental to empower such initiative, and today is one fine day where we all have come together to officially welcome this platform among us. Before we move forward with the program, look at the guys. Look at the leaders we have today. We have Bhavya Bharat Foundation, Mr. Rangam and his team. हम आज सुबह से बात कर रहे हैं कर्तव्य। रंगम और उनकी टीम यूथ में एक जागरूकता फैला के अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। We have Shri Arpit Agarwal sir and Professor Vinay Chandna ji, जो education को हर घर पे पहुंचाने का सपना रखते हैं। And then we have Mr. Vijay Shekhar Sharma, जिन्होंने इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बदलने का कर्तव्य बहुत ही बखूबी निभाया। Once again, thank you for this positive aura we have today. Now, as we have our dignitaries on the dais right from the stage, this is the moment where we can commence the program formally, and for the same, I would like to request all of you to please proceed for the lamp lighting. I request all of you to come to light the lamp, which is the customary in India. Whenever we commence any occasion, we do it with divine light. And the light is the testament that today we have positive era in this auditorium. Thank you so much for the lamp lighting. I request all of you to please take a seat. Mr. Vijay Shekhar Sharma. Sir, today's your presence has added a lot of value to the existing system we have at JECRC Foundation. In fact, the system we have established in the state of Rajasthan. And to welcome you and to express our gratitude, I would now like to request our Honorable Vice Chairperson
Shri Arpit Agrawal sir to present a floral bouquet to our guest, Mr. Vijay Shekhar Sharma, founder, Paytm. Thank you so very much, sir. I would like to see the energy whenever I say Mr. Vijay Shekhar Sharma. Thank you, sir. Now we have the team from Bhavya Bharat Foundation. I would request Mr. Arnav Bhatt to please come on the stage and present a floral welcome to Mr. Vijay Shekhar Sharma. Thank you so much, team. I would now again request the team Bhavya Bharat Foundation to present a floral welcome to our Honorable Vice Chairperson, Shri Arpit Agrawal. Thank you so much, team. Thank you, Arnav. Thank you, Arnav. I request Mr. Tarun Saraswat, Incubation Manager at JECRC Incubation Center, to please come on this stage and present a floral welcome to Mr. Rama, the founder of Bhavya Bharat Foundation. Mr. Tarun is with us. Please welcome Mr. Rama. Thank you so much, Tarun. Please give them a big round of applause because just because of Raman, we all are witnessing this grand launch of the day. Now I would like to request again the team Bhavya Bharat Foundation to present a floral welcome and a memento to our Professor Vinay Chandnaji, who is the principal of this esteemed institution, JECRC Foundation. I request the Bhavya Bharat Foundation team to come forward for the floral welcome. Thank you so much, team. Now I would like to request Ms. Ayushi Jain to come on the stage and present a floral welcome to Mr. Vaidhinath Iyer. Ms. Ayushi is the Associate Incubation Manager at JECRC Incubation Center. Please come on the dais and present a floral welcome to Mr. Vaidhinath Iyer. Now we have Mr. Dilnawaz Khan, who is the Incubation Advisor at JECRC Incubation Center. I request you to please come upon the dais and present a bouquet to Mr. Rukmil Shah, who is the Project Coordinator at Kartavya Path Blogs. Mr. Dilnawaz Khan, please come on the stage. Thank you so much, everyone. Once again, we would like to show our respect to all the dignitaries on the dais. Today, we have a special person with us who is the backbone of this prestigious organization, institution, JECRC, since 23 years. He is none other than our Honorable Vice Chairperson, Shri Arpit Agrawal sir, and it is my proud privilege to introduce him with the gathering. Mr. Agrawal is a visionary leader with an experience of more than 23 years in the educational domain. He has been a pillar of inspiration
and strength for the state of Rajasthan and has dedicated his entire life to the welfare of the state and education. Besides his contribution to education, Sir is a serial entrepreneur with a keen eye and skill of entrepreneurship, and with his dream of building the startup culture and making Rajasthan the startup capital of India, we have developed the JECRC Incubation Center. Not just entrepreneurship. Sir is an ever-ready individual to work for the social cause and has laid the foundation of many social initiatives ranging from blood donation camps and collection to supporting the needy with every need of theirs. Please join me and put hands together for our Honorable Vice Chairperson, Shri Kartavya Path Blogs. Kindly come here. Morning everyone. Good morning, sir. Morning everyone. Good morning, sir. So what a morning this has been, sir. I have been part of this auditorium for maybe what? Today will be the 1,000th time that I am coming and sitting and watching an event on this auditorium. But जो जोश और उत्साह आज देखने को मिला है ना सर, वो आज से पहले कभी नहीं मिला है। और ये सब आपकी वजह से। Truly honored to have you on the campus, sir. As I was mentioning, Rajasthan probably has seen everything around this startup entrepreneurial ecosystem, but your presence was missing on the town, sir. हमें मेरी शिकायत भी है सर, मेरी बहुत हम्बली है आपसे कि आप जयपुर पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। काफी टैलेंट है सर यहाँ पे भी, अगर ध्यान देंगे तो हमें we need someone to handhold us and give us that conviction, sir. So thank you very much for sparing your time. Sir has specially flown down from Bangalore just to attend this event, and I must tell you, he would just stay with us for what couple of hours. At what 1 o'clock he would leave and he has a flight to catch. So sir, thank you very much for your presence. We are really honored. So I warmly welcome everyone who's part of this auditorium. I want to sincerely appreciate and thank Bhavya Bharat Foundation founder Rangam for giving us this opportunity to host this Bhavya launch of Kartavya Path Blog at JECRC campus. Because Rangam needs louder round of applause, guys. This event could have been hosted anywhere in the country. Trust me, anywhere in the country, and best of the institutions much better than what of JECRC. But Rangam said that we would want to do it in Jaipur and we would want to do it in JECRC. Rangam, we are so grateful for this. And guys, I know since we are running on tight timelines, I do not want to spread any gyan around this startup ecosystem because we have the man who can do it and who can do it the best. So we'll spread that gyan for sir. When sir will come, he'll talk to you, he'll tell you about his success stories. I just met him for the first time in last 20-25 minutes. I realized that there's much more needs to be done. What he has created in the 90s, it is difficult for most of us, even in 2023, to aspire for that. You know, just 25 years back when there was no ecosystem at all. I'm sure मैं कहूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, सर ही अपनी सारी स्टोरी बताएंगे तो बहुत मजा आने वाला है. So thank you so much everyone, won't take much of your time. But sir, yes, I can assure you, Rajasthan is a formidable ecosystem for entrepreneurship. Sir, ये land की entrepreneurs की है sir. अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो, और मुझे लगता है कि entrepreneurship का सबसे important ingredient अगर कोई होता है तो वो education होती है. And I'll be very proud to share that sir, in Rajasthan we got 89 private universities sir. And 89 is the highest in the country, sir. In one state, there are 900 odd universities. So, right talent available, sir. Right manpower to nurture. So thank you everyone, and I once again give a huge warm welcome to everyone. And I thank again Rangam and his team. And Rangan, I can assure you that this Kartavya Path blog, I'm sure in the first session everybody must have talked about it. But yes, the policies and the governance which needs to be reached out to the millennials and the youth of the country in their own language. You know, that is what is most critical, because all the policies, everything is available on internet and government websites.
but I don't know how much of that our youth would connect to. So all this would be written in the blogs by all of you and in your own language. I'm sure it will be much easier for all of us to understand. Thank you so much everyone. Thank you so much, sir. It is always pleasure listening to you whenever you are on the podium. There's something new to learn from the visionary leader like you, sir. Thank you so much. हम बात कर रहे हैं भव्य भारत की, और इस भारत को भव्य बनाने के लिए जिसने योगदान दिया है वो हमारे बीच में है, मिस्टर रंगम. Before I call him upon this stage, I would like to introduce Bhavya Bharat Foundation to you, which has initiated the Kartavya Path Blog. So this is an initiative focusing on informing, inspiring and involving the people and especially the youth of India during its Amrit Kal. Kartavya Path Blogs covers 10 themes with well-researched and insightful blogs which will be published in Hindi and English. The blogs will be written by youth experts, amplifying youth's perspective on Amrit Kal. We have Mr. Rangam with us today. He has after completing his graduation, he did his public policy analysis from London School of Economics, and this is where he identified the need of such platforms like Kartavya Path Blog. I would now like request to Rangam to come on the dais. Please grace the audience, share your experience and also proceed further with the launch of Kartavya Path Blog. कोमल जी, आज जयपुर राजस्थान की इस भूमि पर कर्तव्य पथ ब्लॉग्स का भव्य भारत फाउंडेशन और JECRC यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन से लॉन्चिंग हो रहा हो, और वो भी JECRC जैसी यूनिवर्सिटी जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस किया जाता हो, और उसमें भारत के कैशलेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के पायोनियर में से एक ऐसे मिस्टर विजय शेखर शर्मा हमारे बीच उपस्थित हो, उससे बड़ी गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती. हम बात कर रहे थे जब विजय जी आए कि हम सब यूथ है, हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तब परिवार की, समाज की हमारे पर कितनी अपेक्षाएं होती है. तो वैसे भी विजय जी जब अपना ग्रेजुएशन करके निकले तो उनके परिवार की भी अपेक्षा रही होगी. तो उस वक्त उनको पूछा गया कि आप विदेश के लिए क्यों प्रयास नहीं करते, आप विदेश क्यों नहीं जाते, यूएसए जाकर अपना फ्यूचर क्यों नहीं बनाते. मुझे गौरव होता है इस बात को कहने का कि विजय जी ने उस वक्त अपने परिवार को यह कहा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और इसलिए मैं भारत में रहना चाहता हूं. दोस्तों, कर्तव्य पथ ब्लॉग्स आज भारत अपने अमृत काल में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, और 2047 में जब भारत अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल खत्म करेगा, तब एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं. तब आज भारत में 100 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स है. आज भारत में 180 किलोमीटर पर आवर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भारत में बन रही है. आज पिछले दशक में 146% एक्सपोर्ट में बढ़ावा हुआ है. आज भारत अपना 5G खुद डेवलप कर रहा है और 6G टेस्ट बेड पर आगे बढ़ रहा है. आज भारत में गवर्नेंस लास्ट माइल तक पहुंच रहा है. दोस्तों, आज हम युवा होने के नाते हमारा दायित्व विशेष है कि हम इस पर अपना योगदान क्या देंगे. और कर्तव्य पथ ब्लॉग्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश के युवाओं को अपना मंतव्य आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. इस पर 10 थीम्स में बात होगी, जिसमें रिफॉर्मिंग रेलवेज, इंडियाज हाईवेज, इंडियाज गवर्नेंस, न्यू इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप और ऐसे अनेक विषयों पर 10 थीम्स में बात होगी. और इंग्लिश और हिंदी में ये ब्लॉग्स प्रकाशित होंगे. इसका सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री रहने वाला है. और मुझे ये कहते हुए भी गौरव होता है कि ये यूपीएससी प्रिपरेशंस करने वाले, यूजीसी नेट और ऐसी अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों को भी बहुत मदद रूप साबित होगा. और इसके साथ देश जब रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है तो कर्तव्य पथ ब्लॉग्स भी
गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में रिसर्च और एनालिसिस को बढ़ावा देगा और हमारे देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारे 140 करोड़ लोगों का जीवन ये गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका गौरवगान ये विश्व के सामने फैक्ट बेस्ड ब्लॉग से रखेगा। हम गौरव के साथ कहते हैं और JECRC यूनिवर्सिटी को धन्यवाद करते हैं कि उनको हमें यहाँ पर ये लॉन्च करने का मौका दिया। और मैं विनती करना चाहूंगा आदरणीय विजय शेखर शर्मा जी से कि यहाँ पर एक कोड डिस्प्ले होगा, QR कोड, उसको स्कैन करके हम कर्तव्य पथ ब्लॉग्स का लॉन्चिंग करेंगे। आज देश डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटल इंडिया में कर्तव्य ब्लॉग्स का लॉन्चिंग भी डिजिटली होना चाहिए और इसीलिए QR कोड स्कैन करके हम लॉन्च करेंगे। हम विनती करते हैं विजय शेखर जी से कि वो प्लीज लॉन्च करें। come forward, ऊपर आ जाइए। वेरी नाइस एंड एक्चुअली लोगो भी बहुत अच्छा है और नाम तो बहुत ही अच्छा है, कर्तव्य पथ। इट एक्नॉलेजेस रिस्पांसिबिलिटी, अमेजिंग। डिजिटली लॉन्च करने का आइडिया मुझे था। अरे गुड आइडिया, परफेक्ट। कर्तव्य पथ ब्लॉग्स, जहां युवा लिखेगा और भारत पढ़ेगा, जहां अनुसंधान और ज्ञान का होगा समन्वय और जहां अमृतकाल में नए भारत की यश गाथा का होगा गौरव गान। यहां 10 विभिन्न थीम्स पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होंगे ब्लॉग्स। रिफॉर्मिंग रेलवेज में होगा रेलवे की गतिशक्ति का परिचय। न्यू इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप से मिलेगा विश्व गुरु भारत का प्रमाण। रक्षा शक्ति से होगी सुरक्षित भारत की प्रतीति। आत्मनिर्भर भारत से मिलेगा समर्थ भारत का प्रतिमान। न्यू इंडियाज गवर्नेंस से होगा अंत्योदय चरितार्थ। न्यू इंडियाज कमिटमेंट टू एनवायरमेंट दर्शाएगी प्रकृति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। न्यू इंडियाज हाईवे से स्थापित होगा भारत का गतिमान। एजुकेशन एंड स्किलिंग न्यू इंडिया से होगा भारत की ज्ञान शक्ति का दर्शन। फ्यूचरिस्टिक फार्मिंग करेगा आधुनिक कृषि और खुशहाल किसान की बात। रिजुविनेटिंग इंडियाज सिविलाइजेशन हेरिटेज से होगा संस्कृति का शंखनाद। आइए इन्फॉर्म टू इंस्पायर के मंत्र के साथ भव्य भारत फाउंडेशन और निर्वध्य फाउंडेशन के इस प्रयास को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। विजिट एंड सब्सक्राइब www.kartavyablogs.in। Many congratulations, Mr. Rangam and his team and Bhavya Bharat Foundation for the launch of Kartavya Path Blogs in the presence of Mr. Vijay Shekhar Sharma. जहाँ हार्डवेयर और डेडिकेशन की बात होती है, अगर ये दोनों मिल जाए ना तो सफलता निश्चित है। और भव्य भारत फाउंडेशन की टीम भी इसी मोटिव के साथ काम करती है एंड भव्य भारत फाउंडेशन ने आज उन सभी इंडिविजुअल्स को यहाँ फेलिसिटेट करने का निश्चय किया है एंड फॉर द सेम आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द फेलिसिटेशन सेरेमनी। And I would like now to request Ms. Nidhi Agarwal
Bhatt please come on the dais for the felicitation ceremony. बहुत ही मेहनत से कोई एक प्लेटफॉर्म बनता है और आज आप उन चेहरों से मिलने वाले हैं जिन्होंने भव्य भारत फाउंडेशन को बनाया है. नेक्स्ट वी हैव मिस्टर रंगम त्रिवेदी, फाउंडर ऑफ भव्य भारत, मिस्टर अर्पण भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर वैद्यनाथ अय्यर, मिस्टर रुक्मेश शाह, मिस्टर देवांश शाह, Mr. Parth Bhatt, Mr. Vaidyanath Iyer on the stage right now. Then we have Mr. Rukmesh Shah. Now we have Devansh Shah from Bhavya Bharat Foundation team. I request Parth Bhatt to come on the stage. They all are bloggers who have curated the content on Kartavya Path Blogs. Now we have Yashashvi Rana, Miss Yashvi Rana on the stage. Then we have Miss Navina Singh, Mr. Prasad Raje, from Bhavya Bharat Foundation, Mr. Vaibhavi. We have Ms. Navina on the stage right now. I request Prasad Raje to come. I think you know. Next we have Ms. Vaibhavi from Bhavya Bharat Foundation. We have Mr. Tirth Shah. We have Mr. Tirth Shah from Bhavya Bharat Foundation. In continuation with this ceremony, we are talking about the startup and entrepreneurship, and I'll take just 1 minute to let you know, guys, that this prestigious institution has established a JECRC Incubation Center back in 2016, sir. And today we have more than 50 startups who have already commercialized their product and have raised more than 10 crore rupees from different agencies. Today we have such entrepreneurs who have dared to dream and stand apart from the crowd. So I would like to invite the first one, Mr. Prakhar Jain from Muraval Healthcare. I would request all of you to please come at this stage. Mr. Prakhar from Muraval. Give a big round of applause, guys. They are your colleagues, your classmates. Next we have Ms. Sheetal Oja, Aman Saxena from Zona Soul. Ms. Sheetal and Aman has recently raised 25 lakhs rupees from JECRC Incubation Center. We have Ms. Sheetal and Aman from Zona Soul. I request Mr. Aryan Kumawat, founder Urban Biotics, to come on the stage. We have Ms. Sheetal and Aman. Aryan Kumawat from Urban Biotics. Do we have Aryan? Jay Saini from Cybers. I would request all of you to come quickly. This is the moment, guys, when they are receiving the appreciation from none other than Vijay Shekhar Sharma, the vice chairperson of this organization. Jay Saini from Cybers. Mr. Arvind from Secret Eye. Mr. Vaibhav from Pon Panchayat. Rachit Jain from Prakrit Veda. Manan and Arnav from Infinity Network. Right now we have Arvind with us. Next is Rachit from Prakrit Veda. I request Manan and Arnav to come on the stage.
Rachit from Prakrit Veda, Vaibhav from Pune Panchayat, Chetan from Trillius, Manan and Anna from Infinity Network, Tushar Jain from Little Fox. We have Manan and Anna with Vijay Shekhar Sharma ji. They are the founder of Infinity Network. Mr. Chetan and Arun from Trillius. Mr. Tushar Jain from Little Fox. Chetan and Arun. Please give them a big round of applause, guys. They have literally worked hard to earn this place today. Tushar Jain from Little Fox. Next we have Mr. Ujjwal Mittal, the founder of Localize. Kush from 7 Colors and Aman from eBharat Wi-Fi. We have Ujjwal from Localize, Kush from 7 Colors. This is the moment they have earned brought the year. Give them a big round of applause, guys. We have Mr. Aman from We have Mr. Aman from eBharat Wi-Fi. And next I would like to request Mr. Tarun Saraswat, who has been instrumental in developing the startup ecosystem at JECRC Incubation Center. Please give a big round of applause to Tarun Saraswat. Last but not the least, कोमल जोशी, जो कि मैं हूँ, सौरभ। Yes, sir. I request all of you to please take a seat. Thank you so much for the felicitation program. It means a lot to all of us. Okay. So now we have the moment. Everybody was waiting. Sir, all of us are eagerly waiting to listen to you. Though we know you, sir. कहीं ना कहीं सुबह शाम हम कुछ आवाज सुनते रहते हैं. Paytm करो या 445 रुपए प्राप्त हुए हमारे लिए विजय शेखर शर्मा जी तो हम Once again, guys, I would request to put your hands together and give a big round of applause to all. And give a big round of applause. Wow. So ये कहानी 1998 की है जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज में से जैसे आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए क्यू में होते हो तो मैं भी कॉलेज में जॉब के लिए था बट मेरी एक प्रॉब्लम थी मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आया तो जब मेरे क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते थे और मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ तो वहाँ पे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे तो जो शब्द लिखे जाते थे वो तारे जमीन पर पे ना अल्फाबेट कर रहे होते थे तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्कूल में तो टॉपर था I was 14 years old when I completed my class 12 14 साल which means that I would have skipped the classes, I would have been one of those students who would have gone forward but engineering college में मैं क्लास के फ्रंट में था क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था
बट धीरे धीरे करके एक दिन एक टीचर ने मेरे को खड़ा करा और मेरी समझ में नहीं आया कि योर लिप्स मूव बट आई कांट हियर व्हाट यू से वाला मूवमेंट था, और मेरे को चौंक आके लगा। और मेरी जिंदगी में से ज़्यादा दयनीय मूवमेंट नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करके क्लास के बाहर चला गया। भाई लोगों, आप मानोगे नहीं, जिंदगी में एक मूवमेंट आता है जिसमें कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है। तो जब मैं क्लास के बाहर जाऊं तो एक तो कैंटीन की तरफ जाता हुआ रास्ता था और दूसरा कंप्यूटर सेंटर की तरफ जाता हुआ रास्ता था। तो लकीली मैं कंप्यूटर सेंटर की तरफ चला गया। तो जब जॉब लगने की बारी आई तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सप्लीज लग रही होंगी, कंपार्टमेंट आ रही होंगी, क्योंकि वो जब एग्जाम ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो रहा है, हाउ डू यू आंसर अ क्वेश्चन दैट यू डोंट नो द क्वेश्चन ऑफ। एंड वाओ, लकीली मैंने डिसाइड कर लिया था कॉलेज में जब तक जॉब आई थी कि अब ना 1997 की बात कर रहा हूँ, जॉब लेने वाले क्यों बनेंगे, जॉब देने वाले बनेंगे। आज सुन के लगता है कि क्या खाके और क्या पी के वहां पे बात सोच रहा हूँ उन्होंने। और जब जैसे यहाँ पे चॉइस आई डिसाइडेड कि मैं ना नॉर्मल जॉब नहीं लूँगा, नॉर्मल जॉब नहीं लूँगा, मैं यूएस नहीं जाऊँगा। मुझे समझ में आ चुका था, बाय द वे 1999 इज द टाइम व्हेन इंटरनेट रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग, एवरीबॉडी वाज गोइंग, Y2K प्रॉब्लम थी, याद होगा आपको, ईयर 2000 की बग थी, सब लोग यूएस जाना चाह रहे थे। तो मैं उसको चूज कर रहा था नहीं था, और मेरे फादर टीचर, मेरी मदर हाउसवाइफ और किसी के घर में इंजीनियरिंग का छात्र, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। फैमिली में मैं ब्लैक शीप इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर ही पहला वाला था मैं अपनी फैमिली में। तो एक और प्रॉब्लम मेरे मतलब हमारे यहाँ पे जैसे हम सब लोगों की फैमिली ऐसी होती है ना जिसमें कि फादर मदर के थ्रू बात करते हैं, सीधा सीधा लड़के से बात नहीं करते। इससे पूछो ये यूएस क्यों नहीं जा रहा, इससे पूछो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मम्मी ने पूछा मेरे से, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी बात ऐसी है कि पापा को बता दो मैं यूएस नहीं जाऊंगा। भैया तू ही बात कर ले। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। So my father was extremely disciplined and very forward looking. मतलब he was computer centric, कंप्यूटर पढ़ाते थे and so on so forth, तो बहुत कुछ था। So I simply said, मैंने बहुत ही सादा शब्दों बोला, मुझे पता नहीं क्या तुम बाहर जाने का प्लान नहीं बना रहे, क्या हुआ, मतलब he thought कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे हो सकता है कि ना योर फैमिली से और इसलिए नहीं जा रहे, शायद वो ये जानना चाह रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा अगर हम सब लोग बाहर चले जाएंगे, मेरी क्लास में सारे लोग मोरलेस बाहर ही जाते हैं, तो यहाँ कौन रह जाएगा, यहाँ का काम कौन करेगा। नो प्रॉब्लम। तो ऐसी फैमिली है जिसकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि एक ब्लैंक चेक हूँ मैं, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए। एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ दैट डेज यंग डिसीजन, एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस, पिछले 70 साल में इस देश की इकोनॉमी में जो बना, पिछले 70 साल की इस देश की इकोनॉमी में जो बना, वो जो $2.5 ट्रिलियन की जीडीपी बनी, जितने हमारे सारे पूर्वज, जितने हमारे सारे ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस की हार्ड वर्क से हम यहाँ पे पहुंचे, वो जो 70 साल में हुआ $2.5 ट्रिलियन, वो अगले 7 से 10 साल में बनेगा। तो अपना $2.5 ट्रिलियन क्यों ना हम लोग अपने बीच में लेके जाए, एंड दैट इज व्हाट इज द रेवोल्यूशन। आपने जो वीडियो देखा था वो वीडियो इसलिए था क्योंकि इस देश में जो हो रहा है वो कहीं पे नहीं हो रहा, अनप्रेसिडेंटेड है। देखो कंपाउंडिंग का फायदा सबको समझ में आता होगा, यू आर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो यू अंडरस्टैंड। सो इन नेक्स्ट 7 years वी आर लुकिंग टू कंपाउंड व्हाट वी क्रिएटेड लिटरली इन दोज मैनी नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब ये चॉइस है हमारे पास कि या तो हम इसको दूसरे लोगों को बांट के दे दें, हैशटैग के हम ऑब्वियसली मार्केट ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अच्छी बात है, और या फिर हम इसको अपने पास अपने देश के अंदर देश की संपत्ति को रख लें। यानी कि ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन है हमारी और आपकी जनरेशन पे, ये जो जनरेशन है, कि जो हमारे देश की अपॉर्चुनिटी हो हमारे देश की बनी रहे, और जो हमारे देश की वेल्थ है हमारे देश में रही रहे, और जो हमारे देश के प्रॉब्लम और सोल्यूशन है वो हम सॉल्व कर पाए। इनफैक्ट दैट इज व्हाट द रिस्पांसिबिलिटी। और देखो लकीली मेरे क्लासमेट, मेरे बैचमेट सारे हाई एंड, मतलब यू कैन इमेजिन ऑल प्लेसेस दे वुड बी एट डिफरेंट प्लेसेस एंड यू विल गो प्लेसेस टू टॉक टू देम। तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉल है, इनकमिंग कॉल, एंड आई एम पिकिंग अप, एंड दिस इज मार्क जकरबर्ग लाइक हिमसेल्फ।
तो वो मेरे से बात कर रहा है कि व्हाई यू फाइटिंग अस सो मच। और ये फाइट थी जो आपको याद होगा वो फ्री इंटरनेट देता था, वो कुछ एक उसका फ्री इंटरनेट करके आई डोंट नो, जीरो रेटिंग प्रोग्राम था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या था, कुछ इंटरनेट वर्ड लगा हुआ था उसमें। So he was like, Vijay, I hope you understand that India does not have internet and we are helping country by this. I said, Mark, I really admire your support to us as a country. I really appreciate that you want us to help, but we may be not needing this help. So वो कहता है, but you know that who would give this internet to this country? I said, few more years you will see that there will be internet far better than any other place in this country. And then sequentially जब मैं मिलने गया उसके पास, और उसने मतलब हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी, मेरी लड़ाइयाँ होती रहती है, गूगल से भी होती रहती है, फेसबुक से भी होती रहती है, गूगल को अभी कुछ थोड़े दिन पहले फाइल हुआ इंडिया में, तो ऐसी फेसबुक वाली जो लड़ाई थी उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एंड वी वर फाइटिंग फॉर दैट लेट नोबडी एल्स कम फ्रॉम आउटसाइड and split our internet. That was very logical thing, right? And again the conversation was very simple about it, that well then if we don't help you then who will help you? ऐसी भी क्या जरूरत है यार, इतने भी मरे गए नहीं है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो दुनिया में हम थर्ड वर्ल्ड नहीं है, वी आर द फर्स्ट वर्ल्ड इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं बात उसकी बता रहा हूँ जब सड़कें और हाईवे नहीं बने थे, एयरपोर्ट्स नहीं बने थे, जिस तेजी से, जिस गति से, जिस स्पीड से जो बन रहा है इस देश में, आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, वी आर एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। आई मीन जो मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम में ले जाएगा, अगर हम कुछ और गलती ना करें तो हमारा मोमेंटम ही हमें ले जाएगा। और देखो ये बात भी है कि बहुत ही अजीब सी बात होती है कि व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाई डू यू डू इट, ये सब भी आती है स्टोरी में, कहानियाँ। हम सब लोगों की जरूरतें बहुत कम है, हम सब अगर आप देखो तो एनी वन ऑफ अस इन दिस रूम इज नॉट अ पॉम्प एंड शो एंड ग्लिटरी, मतलब हमारे यहाँ ना थोड़ा फीलिंग होती है कि यार ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, ऐसी वाली बातें हमारे यहाँ बहुत आराम से ऐसे इनपुट और जजमेंट पास हो सकते हैं। वेल दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोगों के यहाँ पे वो एक ग्राउंडिंग की एक कल्चर है, वेयर वी go back to the country, go back to the earth, go back to where we belong. अभी यहाँ पे मैं देख रहा था, स्टार्टअप्स के नाम देख रहा था, उनके पूछ रहा था, तो एक ग्राम पंचायत के ऊपर है एक, तो हम लोगों को जो हम जहाँ से आए हैं वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। एंड मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, डेवलप्ड कंट्री होता क्या है? डेवलप्ड कंट्री वो होता है जहाँ पे के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो सिटीजन्स हैं, उन सबके लिए एम्पल एंड इनफ हैं, और वहाँ पे जो बेसिक सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पानी, सड़क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एम्पल एंड इनफ है। आर यू नॉट सीइंग इट? मैंने जयपुर को पिछले 10 साल में बदलते हुए देखा है। आई मीन इजंट इट इनक्रेडिबल दैट हाउ द हाईवेज, रेलवेज, airports, everything is dramatically changing, and then the internet connectivity, digital infrastructure, digital ruling. Look, let me also tell you one thing, that the world is significantly divided right now, thanks to the so-called superpower that US used to be, and then the split that the world is going through. It is also an opportunity, कहते हैं ना कि जब आप चाहते हो कुछ तो सारी कायनात आपको मदद करने लग जाती है, तो it is also a global phenomena that we are now looked up to. Whether at one point in time कोई और कंट्री किसी और जगह पे देखा जाता था, अब ये हमारी बात है। आप लोगों को जो अपने अंदर नहीं रखना है, वो अपने अंदर हीन भावना नहीं रखनी, ग्लानी, गिल्ट और एंगलेस। मैं हिंदी में डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एनफ, बट मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, यार हमें ना समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं भी समांतर पट्ट संधारित पढ़ा हुआ हूँ। और आपने अगर देखा हो तो अगर आप जर्मनी के अगर कुछ सिस्टम और डॉक्यूमेंट पढ़ो, या फिर आप जापान के पढ़ो, या फिर रशिया के पढ़ो, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके वो अपनी लैंग्वेज में रखे होते हैं। इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। मैं ये बता सकता हूँ, हमारी एम्बिशन होनी चाहिए कि अमेरिका और बाहर ना हिंदी बढ़ाने के कोर्स वहाँ चलाएंगे, यार इन लोगों के साथ काम करें, ये होना चाहिए। हिंदी सीखेंगे उनकी भाषा, वो हमारी भाषा सीखेंगे, वो वर्क करें, you want our market, talk to us in language we speak. हमारी भाषा में बात करो ना हमसे, हमारी भाषा में हमसे बात करो। और आपने देखा होगा कि lot of foreigners now speak so fluent English to हिंदी, वो इतनी अच्छी तरह हिंदी में बात करते हैं, because they see the opportunity here. In fact, मैं बहुत जगह ट्रैवल कर रहा होता हूँ, thanks to the job that I have, जिसमें कि मेरे को सिर्फ पैसे इकट्ठे करते रहने पड़ते हैं। नौकरी ऐसी है। Well, जब भी कभी आप कुछ 0 to 1 करते हो और बहुत स्केल पे करते हो, तो इट इज़ एंटी ग्रेविटी। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी होती है, इतनी एनर्जी होती है जो रॉकेट के अंदर होती है। और आपको अगर पता नहीं है तो रॉकेट जब ऑर्बिट को छोड़ता है ना, तो उसकी बॉडी जल रही होती है।
This is the energy, that resilience that you need to carry. Believe me or not, उस मूवमेंट में जो जल जाता है ना वो खत्म हो जाता है, और जो बच जाता है तो फिर उसको कहते हैं कि वो ऑर्बिट निकल गई। तो आपको ऑर्बिट क्लोज करते टाइम पे जो ऑर्बिट मूवमेंट आएगा ना, देखो ग्राउंड पे तो सब कुछ सही है नॉर्मल, मीनिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ विल हैपन एट अ टाइम व्हेन यू विल बी सो मच अगेंस्ट ऑल द एनवायरनमेंट। आपने जो शायद स्लमडॉग मिलियनेयर में भी सुना हो, देखा हो मूवी, जिसमें लास्ट में जाके वो जो आंसर है ना, जो आपका नियरेस्ट डियरेस्ट है ना, वो भी कहेगा यार तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़ देना, नौकरी ले ले। लेकिन वही मूवमेंट होएगा जब आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि यार तुम्हारी शादी नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारे ना पैसे नहीं आते महीने के एंड में, तो वही मूवमेंट होएगा। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बताएंगे कि शुड यू डू इट और नॉट, बट एक ही रूल है, जब आप एक स्टार्टअप और जब आप एक पर्पस, जब आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आगे चलते हो, एंड इट नेसेसरली मे नॉट बी रिलेटेड टू द कंपनी, एक्चुअली आई कैन टेल इट कैन बी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। जैसे यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि हमारे दोस्त लोग, मतलब जो संगम और इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बार इट विल बी ओनली बी सॉल्व जब आप एग्जिट रूट बंद कर दोगे। मैं एक ही लाइन देना चाहता हूँ कि आप ना दरवाजे बंद कर दो। जब आप दरवाजे बंद कर दो ना, तो आप सोचना छोड़ दोगे कि मुझे ये छोड़ना है, और जब आप दरवाजे बंद कर दोगे तो आपको हमेशा फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन और आंसर आपके आगे सामने आता रहेगा। एंड दैट इज द ओनली वे व्हेन यू हैव ऑल डोर शट टू द गो बैक। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे पीछे क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, पीछे हमने क्या छोड़ दिया, ये पीछे रह गया। अब जो है वो हम हैं और हमारे आगे ही है, और जो हमारा फ्यूचर है वो भी हमारे हाथ में ही है। एंड दैट इज द ट्रूएस्ट मूवमेंट ऑफ I have had incredible moment of truth। मेरे से लोगों ने मेरी खुद की कंपनी, मतलब ये जो कंपनी है जिसको आप पेटीएम ब्रांड नेम से जानते हो, उसका नाम 197 कम्युनिकेशन है, और क्योंकि मैंने इसको 2001 में 197 कम्युनिकेशन नाम से स्टार्ट किया था। मेरी खुद की कंपनी में मेरे खुद के बोर्ड मेंबर्स, इन अदर वर्ड्स दे आर माय शेयर होल्डर्स एंड दे आर माय बोर्ड मेंबर्स। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 की बात कर रहा हूँ, और इंटरनेट फोन पे आ गया था, यानी कि 3G had happened, and this is the time when I went to the board to say that अभी तक हम B2B करते हैं। आप लोगों ने रिंग बैक टोन सुना होगा, और जो टाइम पे बहुत रेवोल्यूशन था यहाँ पे, आपको श्याम टेलीकॉम हुआ करता था, जिसको कन्वर्ट हो गया एयरटेल हुआ, फिर वो रिंग बैक टोन लॉन्च हुई, वो सब पीछे हम कर रहे थे टेक्नोलॉजी वगैरह। तो वी यूज्ड टू वर्क विद टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जिसमें SMS, USSD ये सारी टेक्नोलॉजी उन्हें देते थे। एंड जब इंटरनेट आया, यानी कि फोन पे इंटरनेट आया, लेट मी से दैट मोबाइल इंटरनेट, सो द ड्रीम वाज दैट हाउ डू वी बिल्ड अ B2C कंपनी, द कंज्यूमर्स दैट वी कैन साइन। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड रूम में मेरे से कहा गया कि विजय, आई होप यू अंडरस्टैंड that you are trying to become a B2B to B2C company, which means you will build a brand। तो मैंने बोला हाँ हम ऐसा ब्रांड बनाएंगे कि लोगों की छाती पे होगा, लोग फख्र के साथ लेंगे। फिर दूसरा बोलता है कि अच्छी बात है, नाइस कॉन्फिडेंस, नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू विल नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर डूइंग दैट, बिकॉज आप तो फ्रूगल हो, आप तो पैसे नहीं खर्च करते, यू आर नोन टू नॉट स्पेंड मनी, यू आर नोन टू बी वर्किंग ऑन लेस। ऐसे ऐसी भी क्या इसके लिए पैसा खर्च करना, वो भी हम खर्च कर लेंगे। तो बोलता है नहीं ऐसे नहीं करना, मैं खर्च करना है, खर्च करने के लिए आपको पैसे रेज करने पड़ेंगे, एंड यू नॉट रेज मनी। मैंने उस टाइम तक करीब 60 करोड़ रुपीस की इक्विटी रेज करी थी, एंड मैं बोला फिर हम रेज कर लेंगे मनी। आई वांट टू टेल यू, आई रेज मनी 25,000 crore of starting capital for Paytm, starting from best of China, Japan, America, only to एंड उनका कहना था कि आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि आपको 100 मिलियन कस्टमर रखे हुए हैं। क्या बात है यार, एक दिन रखे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लाइफ एक तरह की अपॉर्चुनिटी और चांस तब देती है जब आपको अंदाजा नहीं होता। यू हैव टू बी रेडी टाइप से, मतलब जब जैसे कोविड हुआ या फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वो मूवमेंट्स है जिनमें कि आपको एक्सपैंड करना होता है, एंड योर अटेंडेंस, योर अटेंशन, योर परसिवरेंस विल डिसाइड दैट हाउ मच फार विल यू गो। कितना भी जब आप दूसरों की ऊपर अपनी जिंदगी की डेस्टिनी छोड़ देते हो, यानी कि आप अपने रीजन बताते हो, मेरी फेलियर इसलिए हुई क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे कमा लिए, he raised or that company raised more money, or you say that oh I think we could have done better but that company did better. When you stop saying this thing कि दूसरे की वजह से हमारी सक्सेस नहीं हुई, and when you start taking up your own responsibility, the way will open, the door will open. I can tell you that right now, अभी तो यहाँ पे कॉलेज में आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए। You know what I'm trying to say? That there was a time when मेरी शादी एक्चुअली जयपुर में हुई है। मेरे फादर इन लॉ आए और उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि लड़का करता क्या है। मुझे तो लगता शर्मा जी का बेटा है, बहुत अच्छा काम कर रहा था।
ये तो देख के पता चल रहा है बेचारा महीने की सैलरी नहीं प्राप्त कर रहा. But few years later he came himself, and so on and so forth. My intention is to tell you that there was a time when startup was socially unacceptable. मेरी मम्मी मेरे से कहती थी कि भैया तुम इसको छोड़ दो क्योंकि हमारे पड़ोसी बोलते हैं इसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए इसने कुछ डाल लिया है. ऐसे सोचते. और मैं बोला मम्मी आप ये दूसरों के बारे में तो मत बोलना मेरे से. मतलब पहले आपको समझाओ पड़ोसी को भी समझाओ तो इनफ लोगों को समझाने की लिस्ट. बट यू नो व्हाट, हमें कभी वी नेवर नो the efforts of our previous generation on the giant shoulder of whom we are standing. And I want to acknowledge everybody who's senior in this room to say that your effort, your perseverance and your inspiration make us do what we are doing. So thank you so much for being there for us. And ये देखिए जब हम वो वीर गाथा सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान को सुनते हैं तब हमारे अंदर वीर रस आता है. तो वो जो कहानियां है ना कि देश में क्या हुआ, वो कहानियां सुनने की और जानने की जरूरत होती है. और मैं रंगम को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो ये कहानियां वीर रस से भरी हुई कहानियां लिखते हैं आपके लिए. कंग्रेचुलेशन रंगम और उनके सारे कर्तव्य पथ फाउंडेशन को कि वो ये एक काम ले रहे हैं अपने ऊपर. आई मीन दिस इज अ वर्क. नॉर्मली स्टोरी टेलिंग को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कितनी ज़्यादा होती है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी टेलिंग ही होती है जो इंस्पायर करती है किसी को कुछ करने के लिए. तो ये बिगनिंग है रेवोल्यूशन की. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर फॉर स्टार्टिंग दिस. आई वुडंट हैव बीन एबल टू थिंक अबाउट. मेरे से पूछा गया कि आप आएंगे, विल यू कम टू नाइट. नहीं यार, मुझे तो अंडर एस्टिमेट मत करो इसकी वैल्यू को. मतलब आई डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ नोट दैट यू रीड. मतलब मेरे लिए जो भारत का राष्ट्रगान है वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टोरी है. उसके अंदर की हर लाइन जिसमें जो लिखा होता है वो मेरे को एकदम से मोटिवेट कर देता है. जब मैं पढ़ सुन रहा होता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं. पब्लिकली बहुत जगह पे ऐसा हो चुका है कि मैंने वो सुना और मेरी आंखें में आंसू आ गए, क्योंकि ऑल बिकॉज द वर्ड्स दैट इट सेज. तो जिंदगी में आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन एनर्जी चाहिए होगी. तो वो जो कहते हैं ना कि व्हाई आर यू डूइंग इट, जिस चीज के पीछे से आप स्टार्ट करोगे वही मोटिवेशन एनर्जी होगी. एंड इट कैन नॉट बी मनी फॉर श्योर, आई कैन अश्योर यू. क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है, मैं ये खुल के बोलता हूँ इस कमरे में, अगर आपको पैसा बनाना है यानी कि इफ यू आर चेजिंग मनी, let me assure you the odds are against you to make lot of money in this kind of scenario. You will inevitably lose more money probability. Only a few outliers become very, very successful with rich and money. It is actually the love of what you do that will take you far. And that is what. And कहते हैं कि पैशन ना डिस्कवर करता है हमको, हम नहीं डिस्कवर करते. Life lived with a passion and a purpose is a life very, very fulfilling. आप ना फिर काम करना छोड़ देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि सुबह के टाइम पे आप कितने बजे कहाँ से फ्लाइट लेके कहाँ लैंड कर रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. Everything just seems like a normal movie playing in front of you और आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही होती है. और वो लाइफ जो होती है वो बड़ी फुलफिलिंग लाइफ होती है. आप लोग कॉलेज में हो, आप लोग यंग हो, तो यू मे नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दिस बिकॉज यू हैव yet not seen the life of without a purpose. मतलब ये जैसे ये यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं. There is nothing less in अर्पित जी's life अगर ये इवेंट यहाँ नहीं हो रही होती. बट उनकी लाइफ में ये एक अपना मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि मैं ये करूँ. और जिस तरह से मैं JECRC को देख रहा हूँ यहाँ पे अपना, तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग सच एन इंक्रेडिबल इंस्टीट्यूशन. इट इज एक्चुअली अमेजिंग कि मैं जयपुर में आया हूँ और वहाँ पे मेरे से वो, मतलब मैं कहीं पे स्टोरी दोबारा कोट करने वाला हूँ और मैं कहने वाला हूँ मैं जयपुर गया, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन जिनका था वो मेरे से कहते हैं सर ये tier 2 tier 3 क्या होता है, हम भी तो हैं. ये क्या कमी है जो आप में है, हमें क्या कम है जो आप में है. मतलब देखो हमें भी थोड़ा लड़ा के देखो. हम एवरीबडी नीड्स अस अ चांस, राइट. आई थिंक आई वांट टू टेल यू वन थिंग. तो रियली में रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमें चांस दे, अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो आपकी स्टोरी है. उससे पहले तक उसको हो पाना एक बाकी सारी चीज़ों को साथ में आना होता है जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले. सो आई एम रियली सिंसियरली वेरी इंस्पायर्ड एंड हैप्पी टू सी व्हाट योर इंस्टीट्यूट डज एंड हाउ वेल यू एंड एवरीथिंग एल्स. और ये कह पाना कि जयपुर की एक स्टार्टअप की दुनिया में आंध्र के क्षेत्र में ये होते हैं ना मिशन और पर्पस. मैं बताना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हैदराबाद में भी जाता हूँ, मैं आंध्रा का चीफ मिनिस्टर भी मेरे को बुलाते हैं, तमिलनाडु के बुलाते हैं, यूपी के बुलाते हैं, मैं सब जगह जा रहा होता हूँ. मैं यूपी से हूँ तो मेरे को तो जरूर बुला रहे होते हैं. लेकिन ये बातें सुनने में समझ आता है कि तो हो जाएगा. जब अंदर हो जाता है ना कि हो जाएगा तो हो जाता है, बिकॉज अंदर से स्टोरी स्टार्ट होती है. द थिंग स्टार्ट्स हियर. जब आपको यहाँ पे भरोसा हो जाता है ना और ये लॉजिकल फिट हो जाता है, उसके बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती. फिर आपके अंदर जो पावर आती है ना, वो कुछ भी चीज़ आपको मोड़ तोड़ नहीं सकती. और वो एक रोल है.
जब आपके अंदर यहाँ पे कन्विंस हो जाओगे और यहाँ से वो ऑटोमेटिक ड्राइव होने लग जाएगा, देन यू विल बी लीथल. द एज इज ऑन आवर साइड, द डेमोग्राफी इज ऑन आवर साइड. एंड जो हमारी एक और इंटरेस्टिंग बात है इंडिया के अंदर कि हर चीज एक अपॉर्चुनिटी है. जब आप बाहर इंटरनेशनली ट्रेवल करते हो, देन यू आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यहाँ पे मैं करूँगा क्या. सबके बैंक अकाउंट हैं, सबके पास कार हैं, रोड पूरी बनी हुई है, यहाँ पे खाने का भी बहुत कुछ है, मैं करूँगा क्या. एक्चुअली दैट इज वाई रोज इकोनॉमीज ग्रो 1 or 2% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ होता नहीं है. देयर इज नथिंग दैट इज देयर. वो इन्फ्लेशन के ऊपर भी होते हैं. कुछ कंट्री तो डिफ्लेट कर रहे हैं. वी डू बिजनेस इन जापान, जापान इज रिड्यूसिंग इन द साइज. वहाँ पे लोग कम हो जाते हैं. दे डोंट इम्पोर्ट पीपल, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं रखते, वो बड़े अनकंफर्टेबल होता है. तो इफेक्टिवली लोकल लोग कम हो जाते हैं. तो इकोनॉमी श्रिंक कर रही है. वर्सेस इन दिस वाइब्रेंट अमेजिंग इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ एक अपॉर्चुनिटी है और सब कुछ जो आप करोगे वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है. आई मीन इट मस्ट बी अ मूवमेंट व्हेन यू विल फील प्राउड, एंड आई कैन टेल यू दिस दैट यू वर बोर्न इन दिस इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दिस मैजिक इज हैपनिंग. It is extraordinary. It is extraordinary. मैं तो बस एक ही लाइन बोल रहा होता हूँ कि नेगोशिएट करो अपने आसपास के लोगों से. आई मीन एवरी वन ऑफ अस हैज स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो हमारे खुद के अपने वाइसेस और एक्सपेक्टेशंस की हो, जो भी कुछ हो, स्ट्रिंग्स ऑल ऑफ अस हैव. नेगोशिएट विद देम टू गिव योरसेल्फ अ चांस. इफ यू डोंट गिव योरसेल्फ अ चांस, हु विल? एंड दैट इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज. दिस कंट्री इज राइट प्लेस एंड अपॉर्चुनिटी. हमारा देश उस जगह पे है जो हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं ना तो उसको इंटरनेशनल अटेंशन मिलती है. और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये जो हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं उसकी क्यों जरूरत है, मैं ये भी समझाता हूँ. सो मे बी यू नो दिस दैट यू बिलीव व्हाट इज टोल्ड टू यू, एंड आप इंटरनेट का एक्सेस है तो आप बहुत डिफरेंट जगह के बैलेंसिंग ओपिनियन लेने का ट्राई करेंगे इसको. बट आई वॉन्ट टू टेल यू द पावरफुल कंट्रोल्स द नरेशन. एंड इंडिया, because it has not been powerful in the world, so the media in the global environment is not necessarily conducive to India. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा नहीं है और बुरा नहीं है, यहाँ पे अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन बुरे को ज़्यादा एम्पलीफाई करने की ऑब्लिगेशन होती है उनकी, जिससे कि वो हम ऐसा फील करते रहें, और अच्छे के बारे में सेलेक्टिव बातें हो रही होती हैं. और इस चीज़ की वजह से द अमाउंट ऑफ content that we need to write about our own history and what is happening here is so important that I believe that many of you will contribute to this blog. This is exactly what we need. So thank you once again, Rangam, and that you guys are building a platform that will be able to say the stories, and that will be something that we all will learn from कि क्या हो रहा है. I understand कि मोनोलॉग अच्छे नहीं लगते लोगों को, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं ना करते हुए मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ भी जा सकता हूँ. If we have some time, we can allow people to ask question answers. And the last time I'm going to say a few more things, and then if you have question answers, then we'll go with that. एक और बात याद रखना कि जिंदगी में हमेशा 3 तरह के लोग मिलेंगे आपसे. एक छोटे जो आपके कद से छोटे हैं, इफेक्टिवली इट इज नॉट हाइट, इट इज द मनी, पावर और वेरियस अदर थिंग्स, रिसोर्सेज, एक्सेस टू देम. देन यू विल बी पीयर. ये मोर और लेस पीयर लोग होते हैं जो क्लास में होते हैं. और देन यू विल मीटिंग सुपर लार्ज पीपल इन फ्रंट ऑफ यू. जो कोई बड़ा होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो ये मत सोचना कि हम कभी बड़े से टक्कर नहीं लेंगे. और जो बहुत छोटा होता है उसको हमेशा तुम्हें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वही आपकी एनर्जी में ज्वाइन करके आगे बढ़ेगा. So whenever you have an opportunity to fight a big guy, never ever fight, never ever challenge yourself कि मैं नहीं करूँगा. उल्टा वो फाइट जरूर लेना, क्योंकि जब आप उससे फाइट लेते हो तो फोकलोर बनती है. तो हमेशा बड़ी फाइट लेना, बड़ी गेम खेलना, और बड़ी गेम में छोटा प्राइज भी बहुत बड़ा प्राइज होता है, इसका ध्यान रखना. So here are the question answers if you have any, and I'd love to hear them. Yeah. You can just say this. Yeah, I can. Yeah, mine is also fine. Okay. Yeah. So thanks Arpit sir for inviting us, and thanks Arpit sir for curating this wonderful event and Kartavya Path. विजय आपकी बात हम भूली आखिरी में कि बड़ी अपॉर्चुनिटी लीजिए, बड़ी चीज़ करिए. कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ लोग या कुछ चीज़ें या कुछ हालात स्थिति ऐसे होते हैं कि आपको ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है. चाहे वो परिवार हो या समाज हो, और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन इंडिया व्हिच इज अ मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल कल्चर, रिच हेरिटेज, तो वहाँ पर रिश्तों को रखते हुए और कल्चर को रखते हुए, अपने से बड़े छोटों का आदर सम्मान करते हुए
कैसे उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़े और एक that what would be that one line which can just trigger that spark in the people or, and that is a very personal question coming from my side. Yeah, I can tell that कि most of मैं यहाँ आया मुझे देख के शक्ल देख के और फेस देख के समझ में आ गया ये 99% प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है नहीं बेटे तुम्हें तो ये करना है नहीं बेटी तुम ये कर लो and so on मुझे सब समझ में आता है और I mean I have had this and some things have not changed even if a lot has changed. तो सबसे पहले मैं कुछ लाइफ की स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ. फर्स्ट जैसे 20s में जब आप होते हो जब 30 तक जाते हो तो ये लर्निंग लेसन्स होते हैं इसमें जो सक्सेस फेलियर कोई बॉलर नहीं करता. तो पहले तो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल बनाने लगा इस टाइम पे जितने चांस लेना और भगवान करे कुछ अच्छा चांस ऐसा बने जिसमें कंपाउंड नहीं हो सके तो बहुत अच्छी बात है बट इट डजंट मैटर. आई मीन आई एम गोइंग टू से दैट गिव योरसेल्फ टू मेनी फेलियर्स अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू आर इन 30s. 30s से जब आप 40s में जाते हो और 40s से 50s में आते हो दिस इज द 20 ईयर ऑफ योर लाइफ के क्योंकि जो आप 10 साल में करोगे 30-40 के बीच में वही आप आगे करना चाहोगे. सो मोर और लेस ये एक प्राइम टाइम है जैसे कहते हैं. अब आप इसको चाहे क्रिकेट की तरह देख लो चाहे आप टेनिस की तरह देख लो. देयर इज अ टाइम व्हेन योर एनर्जीज आर एम्पली ऑन द पीक साइड एंड देन यू कैन पुल ऑफ लॉट. नाउ इफ यू आर गेटिंग नेगोशिएटेड इन दीज डेज देन यू आर गोइंग टू आउटब्रेक. मतलब आप क्लियरली बोल दो. तो मैंने अपनी मम्मी से कैसे नेगोशिएट करा था मैं बता देता हूँ. मेरी 2 सिस्टर्स थी जिनकी शादी होना बाकी थी. हैशटैग आप समझ सकते हो प्रॉब्लम क्या थी. तो मैंने मम्मी से डील कर ली मैं तब तक नौकरी करते रहूँगा जब तक मेरी सिस्टर्स की शादी नहीं हो जाती. यही है ना डील. सिर्फ शादी किया हाँ भैया ये तो करना पड़ेगा तुम्हें. तो मेरी सिस्टर्स एल्डर होने के कारण 2 साल तक के बीच में 2-2.5 साल तक के बीच में उनकी शादी वादी हो गई. तो मैंने नेगोशिएट करा कि ये जो स्ट्रिंग्स आप मेरे ऊपर लगा रहे हो इनके कट करने की कंडीशंस क्या क्या हैं. And why are you asking me not to do this? Why are you telling me not to do this? Tell me what is the reason that you don't want to do. कभी कभार लोग fearful होते हैं कभी कभार कुछ obligations होते हैं तो उनको clearly कर लेते हैं और फिर आप clearly उसे बता दो कि अगर मैं आपको घर में इस तरह से सैलरी की जगह अपने काम करने से पैसे भेज सकता हूँ तो इज दैट व्हाट विल सॉल्व द प्रॉब्लम और इज इट समथिंग एल्स. तो लिटरली मैंने ऐसे नेगोशिएट करा था जो मैं आपको बता रहा हूँ. लास्ट में तो आगे मैंने अपने दोस्त से मैंने कहा 2 लाख रुपए दे मेरी सिस्टर की शादी है बाद में देते देखो वही कर लेते हैं. सो एक्चुअली मैंने तो अपनी लाइफ नेगोशिएट ऐसे करी थी बट मेनी अ टाइम्स व्हेन यू आर इन योर पीक ऑफ लाइफ यू हैव टू नेगोशिएट और यू हैव टू से दिस. मुझे क्या लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी अपने और जो फैमिली होती है जिसके बाद हम बात कर रहे हैं रिश्तों की बात कर रहे हैं दे ऑल्सो वांट दिस पर्सन टू बी हैप्पी एंड डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. बिकॉज इन दी एंड कोई इतना सेल्फिश नहीं होता कि हम इसको इस तरह से बांध लें रोक लें और कुछ करने दें. तो बहुत ही छोटा तरीका है. आप ये बोलो कि इफ आई डोंट डू इट आई विल नॉट बी हैप्पी एंड आई विल नॉट बी मैं ये करके मेरे को मजा नहीं आएगा लाइफ में कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ. तो आप नेगोशिएट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और आपको सिर्फ एक जो सिंगल मूल मंत्रा है वो कहना चाहिए कि आपको जो चाहिए मैं अगर वो सप्लाई कर दूँ मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू टेक केयर इफ आई हैव टू टेक केयर एंड कैन वी जस्ट ट्रिविलाइज देम टू अ मिनिमम ऑफ देम एंड देन यू विल गिव मी अ चांस. एंड एक्चुअली मैं जानता हूँ ये तो वैसे बहुएं कहती है कि हमारी सास हमें काम करने नहीं देती हम ऐसे करके बोल रहे हो बट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत जगह होता है. हम मतलब एज अ सन इन अ फैमिली तो बहुत ज्यादा होता है बट यू विल बी एबल टू नेगोशिएट बाय टेलिंग देम कि दिस इज इट व्हाट आई वांट टू डू. एंड बाय द वे मैं घर से भाग गया था. मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ मैं भाग गया था और जब ये पैसे वाली बात आ रही है वो 8 लाख रुपए थे जिसके लिए मैं 40% इक्विटी भी मेरे को देनी पड़ गई थी. तो उसके फिर पोस्ट फैक्टो फायदे नुकसान होते हैं. अभी तो स्टोरीज बहुत सारी है. स्पेसिफिक केस सिनेरियो में आपको ये बोल देना चाहिए कि देखो बात ऐसी है कि अगर मैंने ये नहीं करा तो आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई लाइक टू लिव. इफ यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ व्हिच इज फुल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ लाइफ डिसीजंस यू रादर वांट टू नेगोशिएट विद देम. आप उनको जाके बोल दो कि दिस इज इट नथिंग एल्स. स्टबर्न बनने की भी एक मूवमेंट आती है एंड अपॉर्चुनिटी लाइफ के प्राइम में है. सीइंग यू आई एम गोइंग टू से दैट के डू इट सूनर डोंट डिले इट. थैंक यू विजय. फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर गिविंग अ वंडरफुल एडवाइस एंड एक छोटी सी स्टोरी है आपने अपनी मां का एग्जांपल दिया. तो I would request to, if I can request to keep the Q&A short, so that we can proceed further the program. Yeah, please. So mother से related on Facebook I wrote a message to you almost 8 years 2 months 9 days back to invite you and I got that okay Vinay board meeting है I won't be able to come Vijay and my name is Vinay so I got confused कि what is the thing. So आज वो just got a chance to meet. Thank you. Thanks a lot. Thank Thanks you. So maybe allow just one more question or Yes sir. just. So it was really feast to my ears to listen to you, Vijay sir. मेरा सवाल
छोटा सा है कि जब आप कोई इनोवेटिव काम करने लगते हैं, स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है, पीछे नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है आपको। हर्षिल माथुर मेरा कजिन है, जयपुर से ही स्टार्टअप रेजर पे शुरू किया उन्होंने। तो ये जयपुर का सौभाग्य है कि डिजिटल इंडिया जयपुर की एक का ससुराल आया और एक का घर आया। और मुझे याद है उसका स्ट्रगल कि किस तरह से जयपुर में उसने डोर टू डोर बहुत सारे स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में प्रयास किए और किस तरह से जो है बिजनेस लेने की कोशिश की और फिर इस यूनिकॉर्न तक पहुंची। पर वो जो नेगेटिविटी है, वो जो कायनात पीछे की तरफ ले जाती है, वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसमें अपनी हिम्मत कैसे बनाई रखें? दैट इज माय क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आइडिया मैटर करता है या नहीं करता है, क्वेश्चन आता है लॉट ऑफ टाइम विद दिस ग्रेट आइडिया एंड देन यू अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूशन में स्टोरी है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इट इज लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में तो जो सर बोल रहे हैं वो रियल है। When you do something which is against the common wisdom, that is the typical understanding of a startup. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड मेंबर मेरे से बोलते हैं, एक इंडियन थे, कहते हैं यार मुझे तुम अजीब आदमी हो, यहाँ पे लोग ना रुपए की माला पहन के शादी करता है भाई अपना, तुम यहाँ पे साले को फोन में ले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हिंदी में बोला उसने बस काउंटे में। तो my other investors were like, what did he say? I said, he said that in a country where currency is loved so much, you are trying to create something which is totally anti-currency is not going to do. So in this scenario, sir, it is exactly the moment when it is the test कि आप कितना committed हो इसके लिए। मतलब do you really believe in what you are saying? And if you don't believe in, तो बहुत अच्छी बात है ना कि it is just early on आपको निकल गया। तो ये सारे जो मैं तो कहता हूँ एक तरह से चक्रव्यूह की तरह से 7-10 steps होते हैं। पहले आपके आसपास के लोग मना करते हैं, फिर आपको बाहर के लोग मना करते हैं, फिर कंपटीशन पुल डाउन करता है, फिर इंटरनेशनल चैलेंज आते हैं। सो लेयर्स में आपकी फाइट होती है और एंड में ऐसी फाइट हो जाती है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिसमें कि देयर इज नोबडी टू टॉक टू अबाउट इट बिकॉज दिस फाइट ओनली यू हैव हैड एंड ये फाइट अब एक्सक्लूसिवली उस तरह की हो गई है कि नोबडी अराउंड यू विल बी एबल टू से एनी स्टोरी अराउंड इट। सो द सिंगल थिंग इज दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू गिव अप बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिसाइड्स कि यहीं तक जाओगे। तो मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, और हम इस साल हम $1 बिलियन रेवेन्यू कर रहे हैं हमने और प्रॉफिटेबल हुए। तो मैं अपनी टीम से मैं बात कर रहा था, तो मैं उनको एक लाइन बोल रहा था, डू यू थिंक दैट वी आर हियर बिकॉज वी वर टू रीच हियर और डू यू थिंक वी आर हियर बिकॉज वी हैव टू रीच देयर एंड वी आर नाउ हियर सो दैट वी कैन रिफ्यूल आवरसेल्व्स? बिकॉज हमें यहाँ तक आने का एक माइलस्टोन था जिसके बेसिस से कि हम आगे की जगह पे जाके मिसाइल ठोक के आएंगे और वहां जाके मार के आएंगे। ये तो नहीं था ना कि यहाँ पे आना, मतलब दिस इज नॉट द सक्सेस, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट दैट वी आर ऑन द पैथ टू सक्सेस, ऑन द वे टू पर्पस दैट यू सेड, एंड ऑल दीज एंटी ग्रेविटी पुल डाउन कंफर्म दैट यू ट्रूली बिलीव इन योरसेल्फ। सो मेरा तो एक ही आंसर है फिर से कि इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू शुड गिव योरसेल्फ अ चांस एंड सबको एक। I request all of you to give a standing ovation to the Vijay Shekhar Sharma. Little louder. Thank you so much, guys. I request all of you to take your seat back. Thank you so much. Vijay sir, यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा एक सपना देखता है और कुछ साल पहले तो ये सपना देखता था कि किसी बड़ी एमएनसी में बड़े पैकेज पे हम काम करेंगे, पर आज हर एक स्टूडेंट ये सपना देखता है कि मुझे विजय शेखर शर्मा बनना है। वेल, मैं कुछ और बेटर बात बोलना चाहता हूँ और विजय शेखर शर्मा बनने से बेटर है वो। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो जब आप किसी एमएनसी के एक लोकल डेवलपमेंट सेंटर या उसमें काम करते हो तो आप उस कंट्री और उस कंपनी के लोगों के लिए काम कर रहे हो जो आपको थोड़े से पैसे आपके यूं करके महीने के एंड में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब डिसाइड करो यार, ये तो मतलब पुराने जमाने वाली जलालत हो गई ना कि खाला एम्स्टर्डम की किसी बैंक के लोगों के सेटलमेंट अकाउंट को सॉल्व करोगे, कहीं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ के सर्विसेज कंपनी में अपना कुछ बनाओगे जो कि हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ाएगा। यार ये तो डिसीजन आपका। Truly agree, sir. And I just wanted to thank you कि आपने स्टूडेंट को सपने दिखाने की हिम्मत दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अभिन अग्रवाल टू प्रेजेंट अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर विजय शेखर शर्मा। We
are truly grateful to have Sir and the Kartavya Path team with us today. I request Abhinna Agrawal, who is the student of JECRC College and the integral part of this team. जहाँ मैं ये कहूँ कि आज हम ये दिन देख रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अभिन्न को जाता है, तो उसको एक बार और तालियों के साथ उसको धन्यवाद चाहिए. Thank you so much. Now we just have 1 minute. We all like surprises and announcement, and today we have Professor Vinay Chandna sir with us, who is here to make the announcement for you guys. Meanwhile, I would request all the dignitaries to take the dais for just 1 minute. Thank you very much for giving us the opportunity. You are here. जब से पता चला विजय शंकर शर्मा जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो सुबह से स्टोरीज बन रही हैं. मुझे आपने सर 30 सेकंड दिए हैं, लेकिन एक स्टोरी ऐसी बन गई है सुबह से, जिसमें मैं सोच रहा था कि मैं शेयर करूं. आई हैड ए मीटिंग इन द मॉर्निंग विद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. मैंने उन्हें वैसे ही बताया कि विजय शंकर शर्मा जी आ रहे हैं, पेटीएम के ओनर हैं. बोले अबे वो तेरा अलुमिनी है यार. वन प्रोफेसर सेड अबे अपना चेला है. थर्ड प्रोफेसर सेड यार पहले बताता मैं भी आ जाता. यहाँ इतने प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि वहाँ एक लड़का बैठा है उसका नाम बताओ, वो नहीं बता पाएंगे. आपको अपने आप को इतना ऊपर करना है कि ये प्रोफेसर्स कहीं भी खड़े हों और वो आपको पहचान जाएं. सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. एंड द अनाउंसमेंट इज, आज काफ़ी इनॉग्रेशन भी हो गया, एक लॉन्च भी हो गया, तो एक लॉन्च हम आज कर रहे हैं. हम JECRC में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, 5 स्कॉलरशिप पेटीएम स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रहे हैं आज के दिन. स्टूडेंट्स वी हैव टू ग्रैब दिस स्कॉलरशिप. जो भी यहाँ आएगा उसको पेटीएम स्कॉलरशिप मिलेगी. थैंक यू अर्पित सर, थैंक यू वेरी मच. Wow, isn't it exciting? Thank you so much Arpit sir and Professor Vinay Chandna sir for walking extra miles for our students. And now I would like to request all of you to stand up for the Rashtragan. May I request my technical team to please play the Rashtragan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. A huge round of applause for Kartavya Path Blogs, Mr. Vijay Shekhar Sharma and JECRC Foundation. राष्ट्रगान के साथ पता नहीं क्या होता है मेरे साथ. मैं आप लोगों को एक लाइन बताना चाहता हूँ. आपकी लाइफ में ना ये याद रखना, जो लाइन आती है ना भारत भाग्य विधाता, मेरी आंखों से आंसू निकला. मतलब आप हो जो भारत के भाग्य के विधाता हो, ये याद.